Hello guys, I am Chapter this side and welcome to my channel Science Experiment with Aryan. So guys, today we are going to discuss experiment number 5. Sorry this video came late because I was busy and I was doing some work. So let's focus on the video. And guys, today we are going to discuss when we hit a shuttlecock, why does its rear part touches the racket? So I explain in Hindi too. अगर हम शटल कॉक को मारते हैं रैकेट से, उसका जो रियर पार्ट का जो कॉर्क होता है वो रैकेट से क्यों टच होता है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी बिकॉज दिस इज अ वेरी मच एक्सप्लेनेशन वीडियो. सो लेट्स गो टू अनदर स्लाइड. So guys, let's first discuss what is a shuttlecock. A shuttlecock, also called a bird or a birdie, you have heard in Hindi that a shuttlecock is called chidiya, and in English it's also called bird. This is because when you hit a shuttlecock, it flies in the sky and goes to other person. So that's why it's called like this. A shuttlecock, also called a bird or birdie, is a high drag projectile used in the sport of badminton. And this shuttlecock is used in the sport of badminton like you use a cricket ball in cricket and tennis ball in tennis, like this a shuttle is used in badminton. It has an open conical shape formed by the feathers. अब it has an open conical shape. So इसकी ऐसी shape होती है open conical, and इसकी ये जो shape होती है ये एक reason से बनाई जाती है ताकि आप उसको इधर से उधर मार सकें. For example, if you have to hit a shuttlecock to other person so that it can hit to you. For example, badminton is a game of hitting shuttlecock to one person to another. So it's like a game, and the person who misses the shuttlecock loses 1 point. So this type of game is this. So for that the shuttlecock is made in and it's conical shape because जो उसका weight होता है वो नीचे की तरफ होता है, and अगर वो उसको same shape की बना देते, so how can it travel from one place to another? So that's why. Embedded into a rounded cork. I told you rounded cork. अब ये किसका बना होता है? और rubber base. Yeah, cork is a type of thing that is made from the rock of some mountains. The cork became soft because who made cork they remove the cork from the mountain and they put it in a water for some time. That's why it becomes soft. तो गाइस थोड़ी सी इंग्लिश इम्प्रॉपर हो गई, मैं आपको समझाता हूँ. ये जो कॉर्क होती है ये माउंटेन से आती है कभी कभार, एंड कभी कभार ये वहाँ से भी आ जाती है केव्स वगैरह से. तो इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है, ये कहीं पे भी मिल जाती है. बट ये नहीं समझना कि ये यहाँ अगर आप किसी की फार्मिंग कर रहे हो इसको उगा सकते हैं. नो, इट्स ऑब्टेन्ड नेचुरली. एंड इसका ये जो बना होता है ये रबर का या फिर एक कॉर्क होता है. कॉर्क एक मटेरियल होता है जैसे कि मैंने बताया. And if you have seen some bottles of Coke or the glass bottles of Coke or any drink, the cork is placed on that. The shuttlecock shape makes it extremely aerodynamic stable. Now what is aerodynamically stable? Aerodynamically means that it's a term that refers to a thing that has a very very simple and very very conical sharp shape so that it can travel from one place. Now if you talk about an aeroplane, it also has an aerodynamically shape so that it can fly in the sky. A bird, an aeroplane, a helicopter all have an aerodynamic shape regardless of initial orientation, or this means that it does not have anything inside it. As it's cone shaped, you should think that there is something inside it. For example, an ice cream cone, it has some ice cream inside it and outside it. For example, अगर आप एक आइसक्रीम कोन लेते हो, जो आइसक्रीम वो भर के देते हैं वो नीचे तक भी जाती है. आपने अगर नोटिस नहीं करी होगी, so I can show you. You take an ice cream cone and fill some ice cream, and you will find that some ice cream is located inside the cone too. So what is this? This is called initial orientation. So guys, हमारे explain हो गया. Next go to two types of shuttle.
फेदर शटल एंड प्लास्टिक शटल. व्हाट इज प्लास्टिक शटल? प्लास्टिक शटल होती है जो इससे बनी होती है. दिस इज प्लास्टिक एंड इट हैव नेट्स इन इट. फॉर एग्जांपल, one net, 2 net, 3 net. It has many nets, we can't count. And it has a cork type of thing here, and it is black taped because the plastic shuttlecock usually breaks itself. So the tape is here so that it could hold the shuttlecock very easily. And this is an aerodynamical shape, like cone shaped, so that the shuttlecock could go from here to here. This is a plastic shuttlecock. This is made from plastic. This and मैं आपको फिर से बता देता हूँ. ये जो एरिया है ये प्लास्टिक का बना हुआ है एंड नीचे ये जो कॉर्क है ये रबड़ या फिर कोई मेटल का बना होता है. किसी मटेरियल का. एंड ये जो होती है ये थोड़ा लाइट प्लास्टिक होता है. नॉट लाइक दैट जैसे आपके जो कंप्यूटर होता है या फिर लैपटॉप होता है उसका ये जो मटेरियल होता है ये हार्ड प्लास्टिक का होता है. या फिर यू कैन टेक अ पेंसिल बॉक्स, दैट्स अ हार्ड प्लास्टिक. And this is not a hard plastic, it's a very light plastic, and it has an aerodynamical shape so that it can go from one place to another. Now let's talk about the feather shuttlecock. What is a feather shuttlecock? Feather shuttlecock is a shuttlecock that is made from feathers. All the feathers, it has 16 feathers in it, and 1, 2, 3, 4 we can't count. So it is laid, मतलब उसको कॉर्क होती है, उसके ऊपर जो फेदर की वन साइड होती है इट इज़ वेरी पाउंडेड एंड यू कैन टेक अ फेदर एंड यू कैन dig it in this cork so that it becomes stable, and after that some threading is done here. So this is how a feather shuttlecock is made. So now let's go to next video. Now we will see that how does a shuttlecock hit a racket. So let's start the video. What's up, Reddit? We have any fancy shots on point. So guys, this is how a shuttlecock hits. ये थोड़ा वैसा वीडियो था because I can't find any video. So इसमें जब ये shuttlecock मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ उसमें हुआ क्या. पहले इस बंदे को shuttlecock पास करी, फिर उसने मारी एंड दोनों का कॉर्क टच हो रहा है. How come it is touching? Why it's not touching that plastic material or feather material? So we have to find that. So let's go in rest video. Guys, let me take out the pointer and let's go in next video. So guys, when we hit a shuttlecock, why it touches the rear part? So इसका आंसर अब हमें मिल गया है because of law of gravity and weight. Now what is law of gravity and weight? For example, if you take an apple and you will fall it from a height. So अब मैं आपको अपने माइक से एक साउंड सुनाता हूँ, तो आपको साउंड आई. So what is this falling? This is an apple falling from a height. So why does it fall? Why it doesn't go in sky? This is called law of gravity. Law of gravity means that an object falling from a tree goes on the ground, falls on the ground. It doesn't go in the sky. This is because of the earth gravitational pull. The earth pull things towards us because it pulls towards its soil. मतलब जो earth का core होता है, जो उसकी डिफरेंट मैंटल वगैरह, वो उसकी तरफ सारा फोर्स अपनी तरफ लेती है एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल. सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड वेट. अब वेट क्या होता है? अगर आप एक पेन फेंको एंड आप एक समझ लो आप एक पेंसिल बॉक्स फेंको तो सबसे पहले कौन गिरेगा? पेंसिल बॉक्स, बिकॉज इट हैज हैवी वेट एंड जो हैवी चीज़ होती है वो जल्दी गिरती है बिकॉज उसका वेट ज़्यादा होता है एंड जो लाइट चीज़ होती है वो देर से गिरती है. अगर मैं इजी एग्जांपल लूँ, फेदर एंड अ स्टोन.
अब स्टोन का वेट ज़्यादा हैवी होता है तो वो एकदम से गिरेगा, एंड फेदर धीरे धीरे झूमते झूमते गिरेगी. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फेट. So now